children, how are you doing? I hope you all are fine and waiting for the new topic. I am covering, today I am going to tell you about verbs. Very good. तो आज हम verbs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं बच्चों. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है. Can we proceed? चलिए, let's proceed with the topic. A verb is a word that is used to denote an action and the condition of the subject or what is possessed by the subject. Read the following sentences carefully. Mahatma Gandhi was a great leader. I have a beautiful watch. He played cricket match. इन तीनों sentences में in the above sentences was, have and played ये verbs हैं आपकी. Okay. In sentence 1, was tells the position of state or being the subject Mahatma Gandhi. In sentence number 2, have indicates possession. A watch की possession बताई गई है कि मेरे पास एक घड़ी है, बहुत सुंदर घड़ी है. In sentence number 3, played indicate the action of the subject. नोट कीजिए बच्चों, no sentence can be formed without a verb. पॉसिबिलिटी ही नहीं है verb के बिना सेंटेंस बन जाए. Kinds of verb: transitive, intransitive and incomplete verb. Transitive verbs a verb which requires an object to complete its meaning, and intransitive में a verb which does not require an object to complete its meaning but makes good sense by itself. तो इसमें ट्रांजिटिव में हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इंट्रांजिटिव में नहीं ज़रूरत होती है. इनकम्प्लीट वर्ब, वर्ब्स विच नीड द हेल्प ऑफ सम वर्ड्स और वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंस ऑफ द सेंटेंस. रीड करिए सेंटेंसेस. आप कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको, केयरफुली रीड करेंगे. अब हम रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली. ही किल्ड अ स्नेक, रीटा इज स्लीपिंग, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग. इन द सेंटेंस नंबर 1, किल्ड स्नेक एज एन ऑब्जेक्ट, सो इट इज ट्रांजिटिव वर्ब. In the sentence number 2, is sleeping does not take an object to make complete sense, so it is intransitive verb. In the sentence number 3, the verb is does not take an object, but when the word interesting is added, the sense is complete. Hence, it is incomplete verb. अब आपके पास क्या है? आपके पास है main and auxiliary verbs. Verbs are broadly classified into two categories based on their functions: main or principal verbs. These are words like play, write, try, jump, eat, etc. We add an ending. For example, walk, walked. ed add किया हमने इसमें. sing, ing add करने पे बना singing. और we change them to get other forms. For example, drive, drove, driven. It is root form of the verb or the principal verb. Auxiliary verbs, these are the verbs like be, do, have, can, will. They are helping verbs and are used to form sentences, questions, negative sentences or to show the manner of actions expressed by the principal verbs. देखिए, read the examples carefully. He is eating food. तो यहाँ is जो है वो auxiliary verb है. He has done her work, has auxiliary verb. Ravi does not play chess, auxiliary verb is does. सुगम कैन डांस नाइसली, तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब आपकी कैन है. ऑक्सिलरी वर्ब बी मे बी यूज्ड एज इज, एम, आर, वाज, वर, एंड ऑक्सिलरी वर्ब डू मे बी यूज्ड एज डू, डज और डिड. ऑक्सिलरी वर्ब हैज मे बी यूज्ड एज हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव. एक्सरसाइज देखिए बेटा. ए पार्ट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और intransitive. In B part, read the following sentences and fill in the appropriate forms of principal and auxiliary verbs given in brackets. C part, underline the incomplete verbs. जो आपने ऊपर जैसे देखा कौन से incomplete verbs होती हैं उसके अकॉर्डिंग इनको अंडरलाइन करें. और while doing this, have fun, enjoy.